Hello friends, welcome to our YouTube channel at the rate Learn EDUM. Today we are going to study about the nervous systems. Nervous system is very important system in our body because due to the nervous systems we have to communicate to each other and we have to stimulate anything or you have to understand anything due to the nervous systems because it can receive the signal and it can goes to the brain and brain interpret each and after interpretations then it give message or reaction to the body. So nervous system is most important system of the body which made up of many small units of neuron cells. Neuron cell is a structural and functional unit of nervous systems. It means that nervous system is most important system of body which is made up of many small unit of बहुत सारा स्मॉल यूनिट्स जो होता है अब न्यूरॉन सेल से बना होता है और न्यूरॉन सेल्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम्स का. नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम बॉडी like skin, muscles, tissue, bones and sent to the brain. And motor neurons carry signal from brain and sent to all parts of the body. It means that sensory neurons have to carry the signal from body and send to the brain, and motor neuron carry signal from brain and send to the all parts of the body. Now the types of nervous systems. Central nervous system, it consists of brain and spinal cords. Now brain. Brain is a central nervous system, is a part of central nervous system. Brain is made up of two parts, right hemisphere and left hemisphere. Both are connected to each other by corpus callosum. यानी कि जो हमारा ब्रेन जो है वो बना होता है दो पार्ट से, एक राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और वो दोनों को कनेक्ट जो करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस क्यूलम्स. नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. कैसे हमारा ब्रेन जो होता है प्रोटेक्ट होता है. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स एंड स्कूल. जो हमारा दिमाग होता है उससे और बहुत सारा लेयर्स जो होता है उससे हमारा ब्रेन जो होता है प्रोटेक्ट होता है. Outside of brain present three most important layer that protect our brain. In our brain outside three most important layer present which can protect our brain, that is dura matters, arachnoid matters and pia matters. Now a spinal cord. A spinal cord is also a part of central nervous systems. So a spinal cord is a long thin tubular structure made up of nervous tissue that extend from the medulla oblongata in the lower brain stem to the lumbar region of the vertebral column of vertebrate animals. The center of the spinal cord is hollow. Center जो होता है spinal cord का वो hollow होता है and contain a structure called central canal which contain cerebrospinal fluids, जो कंटेंट करता है cerebrospinal fluids. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बना होता है हमारे दोनों जो होता है ये मेड नहीं मेक और मेड MADE मेड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन्स. नाउ द फंक्शन ऑफ different brain parts. So the four brains. Forebrain helps in the thinking section of the brain is what it calls. It means जो भी thinking section जो होता है वो जो होता है हमारा four brains. The forebrain is in charge of process sensory information as well as controlling voluntary activities. The most essential component of the brain is the cerebrum. In the forebrain it contains the cerebrum. It is the most important portion of the brain and it is linked to thought and action.
और ये जो होता है हमारा लिंक्ड होता है थॉट से और एक्शन से। नाउ द मिड ब्रेन्स, इट सर्व्स एज लिंक बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये जो होता है दोनों लिंक करता है फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को, एंड ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस फ्रॉम लेटर टू द फॉर्मर्स। इट आल्सो प्ले रोल इन विजन्स, ये देखने में मदद करता है, हियरिंग, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मदद करता है, एंड अटेंटिवनेस। नाउ द हिंड ब्रेन, hind brain is a visceral function control the center which control the heart function, heartbeats, breathing rates, blood pressure, sleeping and other bodily functions। मीन्स हिंड ब्रेन हेल्प करता है हमारा जो फंक्शन जैसे हार्ट का फंक्शन, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग। नाउ द सेरिब्रम, द रीजन ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट कंट्रोल्स। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस यानी बैलेंस करता है, सिंक्रोनाइजिंग बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करता है, आई मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स एंड अदर सबटल चेंजेस टू मोटर मोशंस वाइल वर्किंग, रनिंग, स्टैंडिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज। सेरिब्रम हेल्प्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। So the peripheral nervous system divided into somatic nervous system and autonomous nervous systems. And autonomous nervous system is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Somatic nervous system. Somatic nervous system is a part of peripheral nervous system which can take information both type of neurons. In somatic nervous system, it is a part of also peripheral nervous systems and it take information both type of neuron like sensory neurons and motor neurons. Somatic neuron system made up of nerves which are connected to skin, sensory organ and skeletal muscles. Somatic nerves are in our control and it is in our controls. Now autonomous nervous systems. Autonomous nervous systems which are made up of many nerves but they are not under control, they work automatically. Means automatic nervous system जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, they work करता है वो automatically. And autonomic nervous system divided into two parts, sympathetic nervous systems and parasympathetic nervous systems. So sympathetic nervous systems only work in emergency condition. It is made up of 31 pair of spinal nerves. But in case of parasympathetic nervous systems works automatically in normal conditions. And parasympathetic nervous system made up of 12 pair in cranial nerves.